Hello students, today's topic is demand for central bank money part 1, in which we will talk about demand for money. When people can hold both currency and checkable deposits, the demand for money involves two decisions. First, people must decide how much money to hold. Second, they must decide how much of this money to hold in currency and how much to hold in checkable deposits. Overall money demand is given by in this form, and we know that this Y represents nominal income, right? And money demand is directly proportional to this nominal income, and this is representing as that money demand is a function of interest rate. So this negative sign indicates the inverse relationship between the money demand and the interest rate. Let's assume people hold a fixed proportion of their money in currency. Call this proportion as this small c, and by implication hold a fixed proportion 1 minus c in checkable deposits. यहाँ पर आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ बिकॉज हम प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं, हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं. तो आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल दैट इफ c is 0.2, then the proportion for checkable deposits will become 1 minus 0.2, which is 0.8. Okay, so this proportion means fraction. Call the demand for currency as in this form and call the demand for checkable deposits as like this. Okay, so the two demands are given by demand for currency will be, हमें पता है कि डिमांड फॉर करेंसी का प्रोपोर्शन क्या था, फ्रैक्शन क्या था, दिस वन, और ये थी टोटल मनी डिमांड. तो टोटल मनी डिमांड का इतना प्रोपोर्शन, इतना फ्रैक्शन विल बी द डिमांड फॉर करेंसी. एंड नेक्स्ट वन द डिमांड फॉर चेकेबल डिपॉजिट्स. अब डिमांड फॉर चेकेबल डिपॉजिट्स का प्रोपोर्शन या फ्रैक्शन क्या था, 1 माइनस सी, राइट, एंड दिस इज द ओवरऑल मनी डिमांड. तो ओवरऑल मनी डिमांड का इतना फ्रैक्शन, इतना प्रोपोर्शन अगर हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी द डिमांड फॉर चेकेबल डिपॉजिट्स. Fine. And when we will add this demand for currency and demand for checkable deposits, then it will be equal to demand for money. Demand for money, or you can simply write this MD, will be equal to demand for currency plus demand for checkable deposits. Fine. So that's all from my side. Thank you.